Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 71st lecture of this series of CRPC. And in previous lecture we had left on the section 300. In today's lecture we would continue on it. So write down points on section 300. Section 300 of CRPC is aimed at preventing any trial by the same court or by any other court of concurrent jurisdiction as long as the earlier judgment of conviction or acquittal remained in force. It is broadly furthering the spirit of double jeopardy as it prevents a multiple pestering मतलब परेशान करना of the accused for the same offense, but Article 20 Clause 2 of the Indian Constitution cannot apply at this stage, as Article 20 Clause 2 apply only when the accused convict. Article 20 Clause 2 applies only when the accused has been convicted, and punished once, and he is convicted and punished again for the same offense. Whereas in reference to section 300, it can be a case of acquittal or conviction. Article 20 Clause 2 applies only when the accused has been convicted and punished once, and he is convicted and punished again for the same offense, whereas in reference to section 300, it can be a case of acquittal or conviction. So आर्टिकल 20 क्लॉज 2 तो तभी अप्लाई होगा जब कन्विक्शन हुआ होगा और पनिश हुआ होगा और दोबारा भी कन्विक्शन और पनिशमेंट मिले दोबारा ट्रायल चलकर सेम ऑफेंस पे, जबकि जो हमारा सेक्शन 300 है वो तब भी अप्लाई होगा पहले अर्लियर जो ट्रायल चली थी उसमें कन्विक्शन हुआ हो उसका या एक्विटल हुआ हो तब भी अप्लाई होगा और अर्लियर स्टेज पर ही अप्लाई हो जाएगा, जबकि ये लेटर स्टेज पे अप्लाई होता है व्हेन द देयर इज टाइम ऑफ कन्विक्शन. And even in the case of conviction, it is only a stage of subsequent trial. तो ये जो सेक्शन 300 में हम subsequent स्टेज कौन सी ट्रायल वाली स्टेज पे ही लागू हो जाएगा. एंड द accused हैज नॉट बीन येट कन्विक्टेड ट्वाइस, अभी तक वो दोबारा कन्विक्टेड नहीं हुआ. The purpose, now let's see purpose. The purpose of section 300 is to provide for certainty of judicial decisions and also to prevent multiplicity of proceedings. Once a court of competent jurisdiction has heard and decided the case, judicial propriety also requires that the same court or any other court of concurrent jurisdiction should not rehear the same case as long as the earlier judgment remain in force. Judicial propriety also requires that the same court or any other court of concurrent jurisdiction should not rehear, means retrial, the same case as long as the earlier judgment remains in force, means it is not set aside by the appellate court. But if the appellate court set aside the judgment and orders for the retrial, then it can be done. Let's see again. A person who has once been tried by a court of competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted of such offense shall, while such conviction or acquittal remains in force, ये पहले हम देख चुके हैं, means it is not set aside by the appellate court, not be liable to be tried again for the same offense nor on the same facts for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 221 or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof. So it is covering two situations, एक तो जिसका ट्रायल हुआ वो वाला सेम केस और या फिर 221 वाला सिचुएशन, डाउटफुल वाला सिचुएशन.
तो एक केस के लिए आपका ट्रायल हो गया, आप कन्विक्ट हो गए या एक्विट हो गए, तो सेम ऑफेंस के लिए तो आपका दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता है। लेकिन जो डाउटफुल वाला जो ऑफेंस चार्जेस वाले डाउटफुल चार्जेस वाला जो ऑफेंस है 220 वाला 221 वाला, उनमें से भी आपका किसी के लिए ट्रायल नहीं हो सकता, बिकॉज द फैक्ट्स आर सेम। सेक्शन अलग हो जाएगा पर फैक्ट्स तो हमारा सेम रहेगा, बिकॉज उस फैक्ट्स पर आपका ट्रायल हो चुका है एंड यू हैव बीन कन्विक्टेड और एक्विटल, सो नॉट ओनली फॉर द सेम ऑफेंस rather also for those offenses on which doubtful charge can be framed. Even for those offenses, a second trial cannot be done. A person who has been once convicted, a person who has once been tried by a court, a person who has once been tried by a court of competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted of such offense shall, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offense, nor on the same facts for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made. अब ये दूसरे ऑफेंस के लिए बात कर रहे हैं, made under subsection 1 of section 221 or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof. तो जो ऑफेंस आपका ट्रायल हुआ है उसका और कन्विक्शन या एक्विटल हुआ है उसके लिए तो दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता है। बट सेकंड कंडीशन ये भी है कि कोई और ऑफेंस जिसके लिए आपके खिलाफ डाउटफुल चार्जेस वाले एग्जांपल में, अल्टरनेटिव चार्जेस वाले एग्जांपल में उसमें चार्ज आप फ्रेम कर सकते थे, उसके लिए भी आपका दोबारा ट्रायल नहीं होगा। अब जैसे मान लो थेफ्ट का ट्रायल हुआ, थेफ्ट में आप कन्विक्ट हो गए या एक्विट हो गए, अब उसी एक्ट से, वो सेम एक्ट से रिलेटेड आपको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ट्रायल कर रहा है, देन कैन दे डू दैट? नो। थेफ्ट का तो दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते, एक्सटॉर्शन एसेट्रा देयर आर अल्टरनेटिव चार्जेस, उसका भी ट्रायल नहीं कर सकते। सो दिस सेक्शन इज रीड टू बी आफ्टर reading 221 etc. Write down a sentence under section 300 clause 1. A subsequent trial by a concurrent court cannot be done for the same offense of which he has been tried earlier and convicted or acquitted. Of which he has been tried earlier and convicted or acquitted. At the same time, he cannot be even tried for any other offense for which, on the same facts and alternative charge, could have been framed under section 221 of the CRPC. Now let's see clause 2. A person acquitted or convicted. A person acquitted or convicted of any offense may be afterward tried with the consent of state government for any distinct offense for which a separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of section 220. Section 220 talks about the several offenses committed in the same transaction. Suppose offense 1, offense 2 and offense 3. These three offenses are committed in the same transaction. And the accused was tried only of the offense 1. Accused का trial हुआ offense 1 का, and suppose after trial he was acquitted here or he was convicted here. Offense 1 के लिए this person is acquitted or convicted. But later on they want to try the accused for offense 2 और offense 3. अब ये alternative charges वाले offenses नहीं है. अगर alternative charges वाले offense होती then they could have tried in under clause 1 itself. These offenses are not alternative charge वाले offenses जैसे कि यहाँ थे. These are the offenses in the same transaction. So you should have joined the charges and tried all the offenses together. You should have to join the charges and you should try the accused for all these offenses together, which they have not done. They tried the accused only for one. Now for the other one, now you want to try. So there they are saying you can, but you have to take the permission of the state government. तो ये एक छोटा सा डिक्लेरेशन है, अगर कोई सेम ट्रांजैक्शन वाला ऑफेंस हो तो उसके लिए आप उसको ट्राई कर सकते हो लेटर ऑन
लेकिन उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा. A person acquitted or convicted of any offence may be afterward tried with the consent of the state government for any distinct offence for which a separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of section 220. Here they are writing separate charge, but actually they are talking about the gender of the charges. तो ऐसा कोई भी ऑफेंस है जिसमें 220 क्लॉज 1 में आपको जेंडर ऑफ चार्जेस किया जा सकता था और उसके लिए आप पहले ट्रायल नहीं हुए हो, दूसरे के लिए हुए हो, तो अब ये जो दूसरा ऑफेंस है इसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट से आपको ट्राई किया जा सकता है. स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के से ही आपको ट्राई किया जा सकता है. नाउ in clause 1 they are using word acquitted or convicted. In second clause also using word acquitted or convicted, but in clause 3 they are only using the word convicted. In third clause they are talking about only the situation where he is accused is convicted. A person convicted of any offense constituted by an act causing consequences which together with such act constituted a different offense from that of which he was convicted may be afterward tried for such last mentioned offense if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted. Here they are saying you did an act and later on it resulted into an consequence. You did an act and later on it resulted into an consequence, and for that particular consequence IPC में बोलते हैं ना जो actus for that particular consequence which were known to the court conducted the trial and convicted you, but later on it found the more grave consequences caused. Later on it is found that more grave consequences caused, but the actus reus was same, but the consequence is more grave now. So can you now be tried for the more grave offense? मान लीजिए जैसे आपने पहले किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, ग्रीवियस हर्ट के लिए आपका ट्रायल हुआ एंड यू आर कन्विक्टेड फॉर द ग्रीवियस हर्ट, बट लेटर ऑन आफ्टर द कन्विक्शन इट वाज फाउंड द पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ दैट इंजरी. मान लीजिए जब तक उसकी सजा हुई थी तब तक वो कोमा में था और लेटर ऑन जब उसको कन्विक्शन हो गया ही डाइड, और मे बी ड्यूरिंग द ट्रायल द पर्सन वाज डाइड बट इट वाज नॉट नोन, द नॉलेज ऑफ डेथ वाज केम लेटर ऑन. Can you be tried for the culpable homicide or murder because that is more grave offense? Answer is yes. Let's see illustration B and C for this. A is tried for causing grievous hurt and convicted. The person injured afterward dies. A may be tried again for culpable homicide. Illustration C. A is charged before the court of session and convicted of the culpable homicide of B. A may not afterward be tried on the same facts for the murder of B. Why? पहले आपको एक बार कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर दिया, अब दोबारा मर्डर के लिए ट्राई नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज द कंसिक्वेंस इज सेम ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. एक्टस रियस इज सेम. कल्पेबल होमिसाइड का भी कंसिक्वेंस सेम था, डेथ था, और मर्डर का भी कंसिक्वेंस डेथ है. सो द कंसिक्वेंस इज नॉट चेंज, सो देयरफॉर दोबारा आपको मर्डर के लिए नहीं करेंगे. लेकिन ग्रीवियस हर्ट उसका कंसिक्वेंस अलग है और मर्डर का कंसिक्वेंस या कल्पेबल होमिसाइड का कंसिक्वेंस अलग है, दैट इज डेथ. हियर इन ग्रीवियस हर्ट द पर्सन इज अलाइव और वहाँ पर दोबारा ट्रायल हो सकता है. Culpable homicide and murder, both of the consequence is death, and therefore once you tried and convicted for the culpable homicide, now appeal में whatever happen that is different thing, but the court of concurrent jurisdiction cannot try you again for the murder. अब कई बार ये मैक्सिम पूछ लेते हैं सेक्शन 300 में, ऑर्डर ऑफ फियर्स convict or order of fiers acquit. This maxim means a person once have been acquitted or convicted shall not be tried again by the same court or concurrent court. So this maxim apply on section 300. यहाँ तक आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का बात है, वो तो ऑर्डर ऑफ कन्विक्ट और ऑर्डर ऑफ एक्विट पर बेस्ड नहीं है, because for that article 20 clause 2 it is essential for that accused be convicted and punished once.
but section 300 is related to this maxim. Out of you are convict and out of you are acquit. So जब अगर ये maxim पूछी जाए तो when you would explain the meaning of this and then you will explain section 300 of the CRPC. Now let's see fourth clause. A person acquitted or convicted. अब यहाँ पे फिर से acquitted और convicted हो गया. थर्ड क्लास में सिर्फ convicted था, फर्स्ट और सेकंड क्लास में acquitted और convicted था, यहाँ पे फिर से acquitted और convicted हो गया. A person acquitted or convicted of any offense constituted by any acts may, notwithstanding such acquittal or conviction, be subsequently charged with and tried for any other offense constituted by the same acts which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged. अब मान लो इन्हें एक ऑफेंस किया, उस ऑफेंस के लिए उसका एक कोर्ट ने ट्रायल किया, कन्विक्ट कर दिया या क्विट कर दिया, लेकिन उसी ऑफेंस को करने के प्रोसेस में कोई और एक्ट भी उसने किया था और उसकी वजह से एक बड़ा ऑफेंस भी हुआ, लेकिन उस बड़े वाले ऑफेंस को ट्राई करने के लिए पहले वाला कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था. मान लो उसने एक एक्ट किया और उसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ट्राई करके उसको कन्विक्ट कर दिया, लेकिन उसी प्रोसेस में उसने एक और एक्ट किया था और उस एक्ट को और अर्लियर एक्ट को कंबाइन कर दो. देयर इज ए बिग ऑफेंस एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज नॉट competent to try that bigger offense. Then can he be tried by the other court for that bigger offense? The answer is yes. Illustration देखो इसमें, illustration number E. अब जिस क्लॉज से रिलेटेड जो illustration पढ़ाते हैं वो बेयर एक्ट में नोट डाउन कर लेना उसके सामने, जिससे याद आ जाए. A is charged by a magistrate of second class with and convicted by him of theft. And you know theft can be tried by second class magistrate also. Theft of property from the person of B. A may be subsequently be charged with and tried for robbery. A may be subsequently tried for robbery. अब रॉबरी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता. अब मान लो पहले आपको ये पता पड़ा इन्हें चोरी की है, अब उस व्यक्ति पे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने ट्रायल किया और ही वाज एक्विटेड और कन्विक्टेड व्हाटएवर उसने कर दिया. उसके बाद आपको पता चला इसने चोरी नहीं की थी, चोरी के प्रोसेस में उसने फोर्स भी यूज किया था, एंड दैट विल अमाउंट टू रॉबरी. देन कैन ही ट्राइड फॉर द रॉबरी? द आंसर इज यस, बिकॉज द कोर्ट विच ट्राइड him earlier for the theft, that court is not competent to try him for robbery. लेकिन वहीं अगर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता, then the first class judicial magistrate is competent to try him for theft as well as robbery. And if the first class magistrate tried him for the theft and later on the court comes to know that the force was also used, then that first class magistrate cannot try him for robbery, because they are clearly saying in the fourth clause that the earlier court is incompetent to try the accused for the bigger offense. The earlier court is incompetent to try him for the graver offense. Then generally some other court can try him for the grave offense. But if the earlier court is competent to try him for that offense as well as the grave offense, तो अगर एक बार उसने ट्राई करके और छोटे ऑफेंस का ट्रायल किया है, तो अब वो बड़े ऑफेंस का, ग्रेव ऑफेंस का ट्रायल नहीं करेगा. A person acquitted or convicted of any offense constituted by any acts may, notwithstanding such acquittal or conviction, be subsequently charged with and tried for any other offense constituted by the same acts which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged. A committed theft, but by the same act it also amounts to the robbery. एक ही element extra होगा, that is use of force. So he committed theft by using force, but the judicial magistrate second class is competent to try theft, so he tried for theft. Maybe because he did not know the force was used. But now after conviction or acquittal it was revealed that force was also used. Judicial magistrate second class cannot try him for robbery, so the judicial magistrate first class can. Therefore the judicial magistrate first class on the same facts try him for robbery. But if these facts come to the knowledge of the judicial magistrate second class that force was used,
then he would submit the case before the CGM, and the CGM would mark the case to the judicial magistrate first class. That is only when the facts are known in between. But if the facts are not known, तब तो दोबारा ट्रायल होगा, क्योंकि ट्रायल उससे पहले कन्विक्शन, वो फैक्ट नोन होने से पहले उसका कन्विक्शन या एक्विटल हो चुका है. Now let's see clause 5. A person discharged under section 258 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the court by which he was discharged or of any court to which the first mentioned court is subordinate. Now this basically related to someone's cases. This part is related to someone's cases. A person discharged under section 258. A person discharged under section 258 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the court by which he was discharged or of any court to which the first mentioned court is subordinate. Means when once the accused is discharged in the someone's case, after then if you want to try him again for that same offence, because earlier we have seen the words used acquittal or conviction, but discharge is not acquittal or conviction. एक एक्यूट हुआ या कन्विक्ट हुआ है, तब आप उसके दोबारा ट्रायल करोगे तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगेंगे. लेकिन अगर एक्यूज डिस्चार्ज हुआ है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, बिकॉज इफ यू रिकॉल द फर्स्ट क्लाउज देयर यूज्ड वर्ड एक्विटल और कन्विक्शन, एंड डिस्चार्ज इज नॉट एक्विटल. एक्विटल मीन व्हाट? Trial on merit, then you are acquitted, and discharge is at the stage of charge framing. And if the accused is discharged, then the prohibition of section 300 will not apply. If the accused is discharged, the prohibition of section 300 will not apply. But here in the first clause, a prohibition of trial, even if discharged under section 258, still if you have tried again for the same offence, then the court which have discharged you, या तो उसका consent लो या उसके किसी superior court का consent लो, then only a subsequent trial can be conducted. So write down for clause 5, whenever the accused is discharged, the prohibition of section 300 will not apply, as discharge does not amount to an acquittal. However, the case of a discharge under section 258, a restriction is there. That is, the subsequent trial can be conducted but only with the permission of judicial magistrate. एक restriction ये है कि subsequent trial तो चल सकती है, but that can be gone only with the permission of the judicial magistrate who had discharged accused earlier, या तो उस कोर्ट की परमिशन से जिसने accused को डिस्चार्ज किया earlier, और with the permission of other superior magistrate. देखो, अगर डिस्चार्ज हुए तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये एडिशनल रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, किसी और डिस्चार्ज में आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती. अगर और कहीं डिस्चार्ज हुए तो यू कैन ऑलवेज डिसाइड अगेन. बट अगर 258 का डिस्चार्ज है, then they are saying, putting restriction, then the permission will be required. Nothing in this clause 6, nothing in this section shall affect the provisions of section 26 of the General Clauses Act or of the section 188 of this code. Nothing in this section shall affect the provisions of section 26 of General Clauses Act or of section 188 of this code. 188 is what? Offenses committed outside India, and when he found it in India, he can be arrested and tried and convicted for that offense in India also. So we would discuss it later on. Now discuss it. Nothing in this section shall affect the provisions of section 26 of General Clauses Act. What is section 26? Section 26 of General Clauses clearly says that if an act amounts an offense in IPC and also an offense in some other law, आपका कोई act that is an offense in IPC and it also amounts to an offenses in other law, then you can only be punished in one of these offenses. मतलब IPC में एक offense है और वही law किसी और में भी offense है, तो आपको punishment किसी एक offense के लिए ही दिया जाएगा. So write down, if an act is an offense in IPC and also an offense in the some other law, then conviction can be done only in one law. Otherwise, it will amount to
डबल जियोपार्डी। अगर कोई एक्ट आपका आईपीसी में भी ऑफेंस है और अदर किसी लॉ में भी ऑफेंस है, देन सेक्शन 26 ऑफ जनरल लॉ सेज दैट अक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड ओनली फॉर वन ऑफ दीज ऑफेंसेस, नॉट फॉर बोथ। एक्सप्लेनेशन देख लो इसमें। द डिसमिसल ऑफ ए कंप्लेंट or discharge of the accused is not an acquittal for the purposes of this section. This already I have told you. Unless you acquitted formally. आपका कंप्लेंट डिसमिस हो गया 203 में, दैट इज नॉट एन एक्यूटल। या चार्ज फ्रेमिंग के समय डिस्चार्ज कर दिया, दैट इज नॉट ऑल्सो एन एक्यूटल। या अदरवाइज किसी भी स्टेज पे डिस्चार्ज कर दिया, दैट विल नॉट बी एन एक्यूटल। देयरफॉर अगर डिस्चार्ज हुआ है तो क्या दोबारा ट्रायल हो सकता है? If you are discharged, can you be tried again, or will the provision will still apply? Here you are not acquitted, so you can be tried again, and only in the discharge of section 258 the consent of the magistrate has to be taken. Now one point to discuss, what is the difference between 221 और 216? इसमें शुरुआत में कोई चार्ज है और फैक्ट वही है, फैक्ट सेम है। इसमें 221 में फैक्ट्स आर सेम, बट जो चार्जेस आर टू बी, जो चार्ज लगाना है वो दैट इज डाउटफुल। दैट इज द सिचुएशन इन 221, बट इन 216 द न्यू फैक्ट्स आर फाउंड लेटर ऑन। जो चार्ज लगा था वो हमारा अर्लियर जो फैक्ट थे उनके ऊपर लगा था, बट लेटर ऑन जब ट्रायल चली सम न्यू फैक्ट्स आर फाउंड लेटर ऑन, तब चार्ज ऑल्टर होता है हमारा। जबकि 221 में फैक्ट सेम चेंज नहीं हो रहे, देयर आर ओल्ड फैक्ट्स, सेम फैक्ट्स, और उन्हीं फैक्ट्स पे यू आर कंफ्यूज, यू आर नॉट श्योर वेदर चार्ज ऑफ थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन वॉट एवर, सो देयरफॉर यू विल फ्रेम द चार्ज ऑफ एनी वन ऑफ देम, या फिर अल्टरनेटिव और लगा कर लिख लो, और या फिर आप फ्रेम द चार्ज ऑफ ऑल। तो इसमें 221 में और 216 में ये डिफरेंस है कि 221 में फैक्ट्स वही हैं, पर कौन सा फैक्ट प्रूव होगा ये समझ में नहीं आ रहा। फैक्ट्स वही हैं पर इन सेम फैक्ट्स पे कौन सा ऑफेंस प्रूव होगा ये समझ में नहीं आ रहा, ये पता नहीं चल पा रहा। जबकि 216 में फैक्ट्स पे आपने चार्ज बनाया जो प्रेजेंट फैक्ट्स थे कोर्ट के सामने, बट लेटर ऑन ड्यूरिंग ट्रायल सम मोर फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, तो चार्ज आपका अल्टर हो गया। सो डिफरेंस इज स्लाइटली इन दिस, इन 221 यू आर डाउटफुल ऑन द फैक्ट्स विच चार्ज टू बी फ्रेम्ड, that which offense is going to be proved later on। ऐसा नहीं है कि बाद में पता चला आपको फैक्ट्स के बारे में, ऐसा नहीं है बाद में पता चला आपको ये वाला ऑफेंस था, आपको शुरू में ही पता है जैसे ये 5 फैक्ट हैं, इस पे ये ऑफेंस भी हो सकता है, ये ऑफेंस भी हो सकता है और ये ऑफेंस भी हो सकता है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कौन सा होगा। लेकिन 216 में पहले आपको एक ही चार्ज के बारे में पता था, बाद में फैक्ट्स कुछ और पता चले ट्रायल के दौरान, तो कुछ और चार्ज का पता चल गया, सो देन यू कैन ऑल्टर। सो देयर here you can alter in 216, but in 221 there is no alteration of charge, because basically on the same facts there could be more than one offenses, but which of them is there you are not sure। तो स्टार्टिंग में ही अगर आपको पता है कि इन फैक्ट्स के ऊपर 2-3 में से कोई ऑफेंस हो सकता है, तो फिर उसके लिए प्रोसीजर दे रखा है, एक का क्लेम करो या सबका क्लेम करो या अल्टरनेटिवली क्लेम करो। Repeating it, in section 221 you are already aware of the fact, and on those facts you also aware that is possible either of these 3 offenses or 4 offenses may be proved। It is not about that you came to later on, no, you came to know later on about any fact, you know the facts from the beginning, you know it right from the beginning, so you will frame the charge accordingly, so you need to alter the charge। और alteration कब होता है? जब कि facts change हो जाती हैं, कोई नया फैक्ट बाद में ट्रायल के दौरान आता है तो ऑल्टर होगा। यहाँ पे तो फैक्ट्स वही हैं, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अल्टरेशन ऑफ चार्ज। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का अल्टरनेटिव चार्ज था, थेफ्ट का चार्ज किया और अल्टीमेटली कन्वेक्शन किया एक्सटॉर्शन पे, अब उसके लिए फ्रेश फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया नहीं आपने। नाउ जो डाउट है वो कि वेदर इट इज नॉट द फेलियर ऑफ जस्टिस, जिस चार्ज पे आप कन्विक्ट कर रहे हो उस का तो आपने डिफेंस ही नहीं लिया, तो हमको यहाँ पर ये नहीं देखना क्या चार्ज लगा है, हमको ये देखना है द पॉइंट वी हैव टू सी इज दैट यू हैव टू अप्रिशिएट इज दैट व्हाट आर द फैक्ट्स ऑन विच द चार्ज इज मेड आउट, एंड द फैक्ट्स आर सेम। जो शुरुआत में 5 फैक्ट्स थे उस पर चार्ज किया है, वॉट एवर द चार्ज में भी उसी 5 फैक्ट पर थेफ्ट का चार्ज लगाया, थेफ्ट की जगह एक्सटॉर्शन का लगा सकते थे या रॉबरी का लगा दिया, बट द फैक्ट्स आर सेम। अब उन फैक्ट्स पे ट्रायल में आपने 5 पे डिफेंस लिया, बट लेटर ऑन उन्हीं 5 फैक्ट्स पे शुरुआत में थेफ्ट लगाया था, लेटर ऑन एक्सटॉर्शन प्रूफ हो गया,
तो अगर आप दोबारा चार्ज लगाते भी हो एक्सटॉर्शन का तो फैक्ट्स तो सेम रहेंगे और उन्हीं 5 फैक्ट्स पर डिफेंस लोगे, देन व्हाट इज व्हाई देयर इज क्वेश्चन ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस? So there is no question of failure of justice because the facts from the beginning, since beginning, is same, and you have taken the defense on all those facts. So that is the main point to you to keep in your mind in 221, that the facts are same, and on the same facts it may be this offense or that offense. So once you have taken the defense on same facts, so tomorrow if you alter the offense also on the same facts, so the defense would be on those facts only which you have already taken, so there is no need of fresh framing of charges. Now let's see one more question. EM2 tries and convicts for theft, and now it comes to the knowledge that force was used and it converts into the robbery. And EM1 tries for the robbery. Then what will happen to the sentence given by the GM2? Obviously, that will be detected by the punishment from the punishment which is given by the GM1. So that's it for section 300. Thank you for watching.